Welcome to the second video of IEO series, International English Olympiad. And the first question of today's session is, the news are very good. It sounds correct. सुनने में तो सही लग रहा है कि news plural है तो are very good. But let me tell you, news is always singular. News is very good. कभी are नहीं लग सकता. I have visited Agra last year. Last year, the moment you see last year or yesterday, or ago, it will always be treated as past indefinite tense. It will go like this: he went to Delhi yesterday, he went to Agra last year. Like this, it will go in past indefinite tense. He is tallest than all the boys. He is tallest than all the boys cannot be, because this is superlative degree and this is used in comparative case. तो ये होना चाहिए he is taller than all the boys. Now the informations are correct, as news is always considered singular और इनके बाद singular verb का यूज होता है. Similarly information के बाद भी singular verb का ही यूज होता है. न्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो, लगेज हो, ट्रैफिक हो, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. इनका प्लूरल नहीं बना सकते. इफ यू मेक इट, इट विल बी इनकरेक्ट. द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट इज रॉन्ग. इट विल बी द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. शी इज गुड इन इंग्लिश. नो, गुड इज फॉलोड बाई एट. अगर वीक होता, शी इज वीक in English, but good at English. I prefer tea. After tea, I prefer tea to coffee. Then will be incorrect. The police is coming. ये तो ऐसे ही सही लग रहा. The police is coming. But the police are coming. इस कब होगा? When it will be a policeman is coming. एक पुलिस वाला आ रहा है. तो a policeman is coming. अगर इसके पहले the लग जाए तो the police are coming. Similarly जब होगा the rich, तो the rich are, the poor are, the deaf are, the blind are. So the police are coming. The police have arrested. मतलब एक नहीं, कई मिलकर अरेस्ट किए. ठीक है. The police are coming or the police have arrested. He has gone to home. Before home we don't use to. So he has gone home. My father is a honest man. यहाँ H देखकर A लगा दिया, जबकि साउंड इसका क्या रहा? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट इट मीन्स स्टार्टिंग विद द वॉल साउंड, और वॉल साउंड के पहले हम एन का यूज करते हैं. लाइक अगर होटल होगा तो साउंड इज ह, सो अ होटल. बट हियर ऑनेस्ट, और इज वॉल साउंड, सो एन ऑनेस्ट. माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन. शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स. उसको डॉग्स से डर लगता है. हिंदी में से आता है, बट अफ्रेड इज फॉलोड बाई ऑफ. So the correct sentence will be, she is afraid of dogs. The children are playing. The children are playing. Child का plural. Child का plural. Children. S is not added. S add करने की कोई जरूरत नहीं है. So the children are playing. Children is already plural, so S लगाने की कोई जरूरत नहीं है. Now he is one of the best player in the team. He is one of the best player in the team. Means सभी में से एक. तो he is one of the best players in the team. So I hope all are clear to you. Thank you.